Shivang will not join. He is in Japan. Okay, so anything on the assignment that we discussed in last session? Yes, sir, there were 3 questions, but I have not done that. So this was a busy week for me and मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, आज भी ठीक नहीं है, but फिर भी मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं कल तक कर दूंगी hopefully. Okay, okay. I think Sakshi has sent certain things on the group also. Yes, sir. You can refer that. तो आज का सेशन अभी तो फिलहाल कॉलेज में अभी सेशनल टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं उसमें थोड़ी बिजी थी और कॉलेज के स्टफ मोस्टली थे, तो नहीं कर पाई. कोई बात नहीं. You refer that what Sakshi has uploaded. Okay, sir. Okay, and in case of any confusion, कोई तकलीफ है तो then we can further discuss about it. It's largely on contract labor management. I have gone through the document. If she would have been online, तो उससे ही समझते अपन कि उसने क्या लिखा है. Sure. गूगल किया होगा लेकिन थोड़ा बहुत समझा कि नहीं जानना जरूरी था उससे. If she joins, we will see what best we can. Okay. So what we covered so far in last 3-4 session was about various acts and labor laws applicable. Still, there are many more that we did not cover. Okay, like Provident Fund, ESIC, then employee compensation. Okay. So what is ESI? Employee State Insurance Corporation. Okay, it is a kind of mediclaim which employees get for themselves and for their families. Okay. So ऐसी कोई भी जगह जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एप्लीकेबल है, अवेलेबल है, ओके, और आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, whether it is an establishment or a factory, if it comes under that ESIC zone, मतलब उस जोन में आता है जहां पर ESIC के हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, so there all the employees are covered under ESIC, right? So it is a kind of medical facility for the employees and their families, and all their medical things are taken care by ESIC. There is a contribution, जैसे हम प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसी तरह से ESIC में कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का. I think 1.75 and 3 like health insurance जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने जैसे हम एम्प्लॉय. मेडिक्लेम लेते हैं ना, Yes, जैसे हम मेडिक्लेम लेते हैं, so organizations which are out of the scope of ESIC, out of the scope मतलब हर इंडस्ट्री कंपल्सरीली शुड बी कवर्ड अंडर ESIC, बट अगर ESIC हॉस्पिटल्स नहीं है, जहाँ पे इस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं है, जहाँ आपका फैक्ट्री या आपका प्रीमाइस ESIC जोन से बाहर है, म्युनिसिपल एरिया से बाहर है, ओके, और वहाँ ESIC का कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, so their companies give an alternate option of mediclaim. Okay. So all the medical treatment are taken care by the organization, and the expenses are reimbursed by the medical insurance company. Okay. So similarly, there is an act called ESIC Act, which is applicable to all the employees and all the establishment and organizations which are in the vicinity of the ESIC hospital. So based on the contribution, there is a contribution by employer and employee, and whatever corpus is there, accordingly the employees are treated. Okay, the medical treatment is completely free for any and every kind of medication. Okay, and it is 100% reimbursed. Then Maternity Benefit Act, that is another act applicable. So these are a few more areas or acts applicable to organizations and establishments all across for the benefit of the employees. Employees compensation, earlier it was workman compensation,
then the name was changed to employees compensation. This is in case of any eventuality. कुछ हो जाता है, suppose accident हो गया और death हो गई, तो उस केस पे compensation कैसे calculate करना है, कैसे देना है. कोई disablement है, हाथ उंगली कट गई, हाथ टूट गया, दोनों हाथ कट गए, पैर कट गए. So as per the type of disablement, किस तरह का disablement है, उसके हिसाब से कितना compensation बनना चाहिए और कैसे calculate होता है. So that is in Employees Compensation Act. Then Payment of Minimum Wages Act, कम से कम कितना पैसा मिलना चाहिए, okay, in any organization. So these are certain acts which are based on compensation. Madam will take a session on compensation. You may speak with her. Perhaps she will cover this provident fund, gratuity, and other calculations in a session also. Okay. So the basic awareness and calculation of salary and CTC structure and all, ma'am will cover. Okay. So tomorrow's session will be on compensation. Okay. Now, having covered all these aspects of HR, whether it is strategical human resource management, whether it is hiring of people, whether it is learning and development, okay, whether it is compliance, everything, all these things generate lot of data and information. है ना? अगर किसी कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो 10,000 एम्प्लॉयज का डेटा अपने आप में बहुत बड़ा डेटाबेस है ना? उनका डेमोग्राफिक डिटेल्स होगा, उनका पर्सनल डिटेल्स होगा, उनका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होगा, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर. So lot of data processed and then some informations are collected. So sorry for the inconvenience. No problem, sir. Okay. So lot of data we will generate. Okay. हम उसके लिए कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, सिंपल एक्सेल फाइल मेंटेन कर सकते हैं, इवन लेजर या हाथ से लिखे हुए फाइल्स भी मेंटेन कर सकते हैं. Depends on the organization size, their capacity of investment, the volume of data, number of employees working. Okay. So based on the size and capacity, there will be a lot of data available in the organization. Okay. Now, important is what this data can help us in, or how this data can be helpful. So HR analytics is another domain of HR, which is now, is being practiced very wide. Analytics, we all understand what analysis means, right? Analysis means Vishleshan. So if you compare for all the years since your standard UKG till whatever year of the college you are, if you put up the marks of every year put together, you will find that sometimes you have improved your performance, sometimes it have gone down. Okay, you can establish a trend that, okay, on an average, if I put together all these 20 years of my scoring from UKG till first year, second year, third year of college, on an average, this is what I have scored. मतलब मेरा मीन जो है 60%, 70%, it has been there. So you can have an absolute number. At the same time, you can have a range also.
Absolute number is if you put together all the marks every year, take an average, you will get an absolute average. That okay, 56.7 is my absolute average. अगर इतने 20 साल का marks में जोड़ूंगी, तो 56.7, 57.7 is an absolute number. Else, you can put it like generally, I score between 55 and 60%. So that becomes a range also. Okay. Based on these informations, you can assume that final year में मैं इतना score कर सकती हूँ. With the effort I put in so far, this is what I've scored. So if I want to exceed that score, what effort I will have to put in? If I put this marks subject wise, पूरे ये 20 साल के marks को अगर हम subject wise रखेंगे, perhaps you will be able to understand that ऐसे कौन सा subject है which you have scored well, ऐसे कौन सा subject है which you have scored less. Okay, कितने scores हैं जो above average? So when you say that my absolute average is 56, 57%, there will be certain subjects where you have scored above 57. There will be certain subjects where you have scored below 57. If your absolute is 57, for example. Okay. Yes, sir. Kind of critical analysis, we can say. Yes. So any analysis, it is always a critical analysis. It depends on, under what circumstances you are doing it. Yes, okay. Sir. So when you have to take a decision based on that, it becomes a critical analysis. Now, when you compare these marks over the period, you will find out that certain subjects are good for me, certain subjects are typical for me. Now, if I want to improve my score, what could be my strategy? जहां मैं अच्छा स्कोर कर रही हूं वहां ज्यादा मेहनत करूं या जहां मुझे मुश्किल हो रही है वहां ज्यादा मेहनत. Okay, that can be a strategy, right? Same thing is applicable in HR as well, and therefore this new domain, a new vertical of HR is called HR analytics, where lot of data churning on the HR data gets carried out. ऐसा क्या क्या है जिसके ऊपर ये डिस्कशन हो सकता है? So in every area, in every segment, you will find that there is a possibility of analyzing the data. है ना? Simple, जैसे भी हम स्कूल का मार्कशीट का बात कर रहे हैं, you might not have thought of all these things so far, कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, कभी हमने किया नहीं. But suppose if you want to change your study pattern, suppose you want to take a decision on your stream, किस लाइन में जाना है. So instead of basing your decision on just the gut feeling, assumption, या एक दो recent score के हिसाब से, if you consider all this data, put it in a table, put it in a matrix, and then you see the trend, then you see the mean, median, you will get a better insight to take the decision. That okay, if my history and economics are strong, I want to qualify for UPSC, let us take these two subjects as a core subject. Because I know this is my strength, I can do better. Okay, if my current affairs is strong, my general knowledge is strong, that can be a subject. But not only on the basis of gut feeling, but basis on this data. That will consolidate and reinforce your decision. Okay. So like any other business decision, HR decisions can also be based on these data analysis. And therefore, HR analytics is a new domain or new area being practiced in large organizations. Okay. This is largely a logical area, and it is purely based on the your own level of thinking.
There is no standard as such. Okay, there can be certain metrics available. There are certain formulas available. But inferences again depends on individual. आप कैसे उसको देख सकते हैं. So from each segment, you can have the data values. आप हायरिंग से लेके उसके एग्जिट तक का सारा प्रोसेस आप मॉनिटर करते हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो. Okay, but still organizations are not able to take strategic decisions on their process improvements. ठीक है. For example, किसी भी organizations में there is a lot of attrition. Attrition मतलब लोगों का आना और जाना, ज्वाइनिंग करते छोड़ते भी है. Okay, now if this is happening on a large scale, so there is one way is छोड़ के जाते हैं immediately recruit करो, छोड़ के जाते हैं recruit करो, छोड़ के जाते हैं recruit करो. So this is one way of handling the situation. Okay, in that case the struggle is continuous because you don't know क्यों छोड़ के जाते हैं, कौन छोड़ के जा रहा है, किस लेवल के लोग छोड़ के जा रहे हैं, मल्टी लोकेशन है तो कहां के लोग छोड़ के जा रहे हैं. Okay, all these things you don't spend time exploring, and therefore what you'll do is you'll continue hiring. लगातार लोगों को हायर करते रहोगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे. The cost of hiring, मुझे एक आदमी को हायर करने के लिए what is the amount I'm spending? Okay, what are the efforts I'm putting in? What is the time taken to hire a person? आपके पास एक पोजीशन है, you got a JD, you got a position, आपने नौकरी पे पोस्ट कर दिया, CV आ गए, देखा, इंटरव्यू किया, हायर किया, ऑफर किया, सब कुछ कर दिया. But if you're not keeping the track of all these critical milestones, मैंने जॉब पोस्टिंग कब किया, मुझे CV कब मिले, कितने मिले, उसमें से कितने CVs काम के थे, उन काम के CVs में से कितने शॉर्टलिस्ट हुए, कितनों को इंटरव्यू किया, इंटरव्यू कितने सेलेक्ट हुए, कितनों को ऑफर दिया, कितनों ने ऑफर एक्सेप्ट किया, कितनों ने रिजेक्ट किया, कितने लोग ऑफर लेने के बाद भी टर्न अप नहीं हुए. Now all these things will help you to strategize your own process. Yes or no? Okay. Yes, sir. So that is one area of HR analytics. Okay, say hiring. Second area, as I said, that separation, the attrition. Third area is say learning and development, training. So कितने लोग हैं, उनको क्या क्या जरूरत है, what are the basis of identifying their training requirements, how many trainings they have already attended, what was the impact of the training, is there any change in their skill level, is there any change in their competency level. Okay, what were the number of days an employee was trained on, कितना population हमने cover किया. Okay, so that becomes another area for analysis. If you take about statutory compliances, okay, so what is my compliance score? टोटल कितने एक्ट्स मुझे एप्लीकेबल है, उस एक्ट के कौन कौन से क्लॉज में क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, उस एप्लीकेबिलिटी पे मैं कहां स्टैंड करता हूं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कहां स्टैंड करता है. Okay, all this are the area of compliances. Then another area can be attendance monitoring.
So Yes, any sir. area of HR, like any other function of the organization, may it be accounts, may it be finance, may it be production. अब तक क्या होता था? HR was considered as a support function, and it was assumed. Things were assumed. Even HR would also take decisions based on the assumption and gut feeling, or as per the scenario, firefighting, yeah, quick fix. But then in the large organizations where the employee volume is high, lot of activities are being done, where impact is global. Okay, my customer base is across. मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसको खरीदने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए. In that case, the requirement from each country, each place can be different. If my organization is multi-location, गुजरात में प्लांट है, यूपी में प्लांट है, बिहार में प्लांट है, महाराष्ट्र में प्लांट है ना, कॉर्पोरेट बॉम्बे में है, सेल्स ऑफिसेस पूरे हिंदुस्तान में हर बड़े सिटी में है. So at each and every location, the employee information will be something which will be critical at each location, irrespective of their state. Compliance requirement will be specific for that each state and offices. Okay. And then keeping a track of all this thing manually, it is very difficult. It becomes cumbersome. And then when you need to take a decision, कौन सा ऑफिस चालू रखना है, कौन सा बंद कर देना है, कहाँ मुझे वैल्यू बढ़ाना है, कहाँ मुझे आदमी इंक्लूड करने हैं. Okay, as an HR, you will get a requisition that in Patna sales office or in Banaras sales office, I need 10 more people. Okay. So being in HR, you have to challenge that why you need 10 people. It is only possible when you know what is the revenue generated from that sales office. उस ऑफिस में जितने लोग हैं वो कितने कस्टमर को कैटर कर रहे हैं, उस ऑफिस से कितना बिजनेस रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस ऑफिस से कितना एरिया कवर कर रहे हैं, है ना. Sometimes the terrain is difficult, although there will be 4 or 5 customers, but they will be critical in terms of traveling, in terms of commutation, in terms of communication. There can be a lot of difficulties and issues. There can be climatic concerns. Okay, and then covering people from one place to another place can be difficult. But all these things only based on gut feelings will not help always. Then what you need is you need some data and information. So when you get this requisition that I need 10 people at XYZ location in my sales department, immediately from HR point of view, you will have certain calculations which will help you to understand whether you really need 10 or less or more, number one. Number two, at what level they are required. है ना, मुझे सीनियर लेवल में लोग हायर करने हैं, मुझे जूनियर लेवल पे लोग हायर करने हैं, मिडिल मैनेजमेंट में लोगों को लेना है, क्या कॉम्पनसेशन हो सकता है, राइट. A salesman operating in Mumbai and a salesman operating in Banaras, the compensation cannot be same. Okay, because the conditions are different. Yes. Work environment is different, challenges may be different. Okay, in Mumbai, perhaps you need more salesmen compared to Banaras for the same business volume, because demography is such. Okay, but all these things you can only discuss or put forth your own opinion as an HR if and only if you have the strong data interpretation ability. Yeah. Okay. Yes. जो वर्कफोर्स आपको मुंबई में मिलेगा वो वर्कफोर्स शायद बनारस में नहीं मिलेगा. Right. So I cannot have a standard, same standard applicable at Bombay and Banaras. What skill set I need for Banaras may be totally different from the skill set that I need in Mumbai.
although product knowledge will be same. So as an HR, you need to devise two strategies around this. Number one, how to train people in both the locations. Number two, what kind of people I need to hire for both these locations. Number three, availability of people in both these locations. Okay. Now, if I want to hire a salesman in Mumbai, getting people will be comparatively easier. Yes, sir. Because almost all the companies will have their sales offices in Mumbai. Okay. So headhunting becomes comparatively easy. Whereas in Banaras, it becomes difficult. Because as a demography, you won't find too many offices in Banaras. Yes, sir. Okay. So then you have to explore dealer network, sub-dealer network, or you have to explore the periphery. बनारस के लिए मुझे अगर आदमी लाना होगा तो शायद मैं नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव इस जोन से एक्सप्लोर करूंगा। यस सर। जहाँ पे ऐसे ऑफिसेज अवेलेबल हैं जहाँ आपको ऐसा स्किल या क्वालिफाइड वर्कफोर्स मिल सकता है। राइट नाउ व्हेन यू हैव टू एक्सप्लोर पीपल फ्रॉम अदर एरियाज द कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर में वेरी। ओके योर रिक्रूटमेंट एफर्ट्स विल चेंज। Yes, मेरा सोर्सिंग प्रोसेस में डिफरेंट। Yes, sir. If it is a highly labor intensive organization, manufacturing plant, I don't need skilled people, for example. I can hire anybody. Basic ठीक ठाक होना चाहिए, 10th pass, 12th pass is okay, maybe ITI is fine, some general smartness, दिखने में ठीक ठाक है, मेहनती है, खट्टा खट्टा है, okay, it's fine. कहीं कहीं काम ऐसा बारीक काम है, जैसे बनारस में टेक्सटाइल हथकरघा इज मोर पॉपुलर, है ना, बुनाई ज्यादा है वहां पे, एंड जनरली इज हैंडमेड। तो वहां जब आपको किसी को सोर्स करना होगा तो योर स्ट्रेटजी विल नॉट बी सेम एज हायरिंग पीपल इन भरूच और इन मुंबई। So for textile industry in Banaras, what you need is perhaps you will explore more female employees. Okay. Perhaps you can have some outsourcing agencies or options where you will provide the design, people will make it at their home and give it to you. Yes. Okay. Whereas in other parts of the country, perhaps you have to set up an textile plant, machine embroidery, machine printing, that way. But all these decisions as a CHRO or as an HR manager will come only and only from the data. Therefore, HR analytics becomes very critical and important domain now when we talk about HR as a function. Okay. So now it is more on the data-driven insight, more on the data-driven approach when we take the decision on any area. If we talk about, for example, learning and development, training activities. So pre-COVID, nobody thought कि हम इस तरह से बात कर सकते हैं या इस तरह से सिखा सकते हैं. Yes, sir. है ना? You sitting in Banaras or in any part of the country, Delhi, Noida, Ghaziabad, I sitting in Bharuch, Gujarat, and me and Anjali and Sakshi will ever connect. It was not perhaps thought of pre-COVID. But now there is a media, there is a medium, blessing in disguise, that you got platforms where we can connect. Okay. Now the challenge for HR becomes what? It becomes the effectiveness of the learning transfer. अभी अंजलि सही में बैठी है या उसने वीडियो रिकॉर्ड करके मोबाइल लगा दिया सामने,
randomly yes मुंडी हिलाता है yes sir it's pre-recorded you No, kept sir. it यहाँ से मैं बोल रहा हूँ उधर से हाँ थोड़ी देर में हाँ सर yes sir okay sir it is coming up. I'm not that technologically trained, so I cannot do that. No, but then you know it teaches us on its own. So when there was a work from home, continuously, you get fed up ना. दिन भर थोड़ी मीटिंग में लगे रहेंगे, जूम मीटिंग में, टीम मीटिंग में. तो लोग ऐसा फोटो निकाल के रख देंगे सामने. So you're giving us a very nice idea. Yes, ideas. So this is one side at the receiving end. Now at the delivering end, it is a challenge for the facilitator to ensure that yes, अंजलि सच में बैठी है, खाली उसने फोन चालू करके नहीं रखा है. Okay. So then the log, connecting log, responses. मैंने कब उसको पूछा और उसने हाँ में जवाब दिया, कब रैंडम हाँ सर सर ओके सर था. So artificial intelligence, AI, that will help you to understand that this was a question when I asked and there was no answer, which means Anjali was not present at all. There was some random reverts, and then I can trace, and then I can send a question paper to Anjali that what was covered immediately after the training, or a Google link will follow. 15 minutes में answer चाहिए. Okay, so if Anjali did not respond immediately within 15 minutes, which means she was not present. Right? So that is how you will measure the effectiveness. And that is where the analytics will play a major role. Okay, so in all the areas, if you see this on the screen, the cost of attrition, as we were talking. तो अब तक हमको इतना पता है कि हमको लोगों को हायर करना है. लोग जाएंगे तो चले जाएंगे, उनको फुल फाल करो, पैसा वैसा दो, छुट्टी करो. लेकिन if we put an insight, how much time or money I'm spending on hiring people. If you start noting the data, you will understand that it is a mammoth task. Okay. एक पोजीशन को भरने में अगर मुझे 80-90 दिन लगता है, which means it is an opportunity loss. ऑफिस में है तो ठीक है, चलो आपका काम कोई और कर देगा, सिस्टम ड्रिवन है, चल रहा है. लेकिन जो सीधा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो सीधा शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, जिसके एफर्ट सीधे पैसे में कन्वर्ट होते हैं, है ना. अगर वो बुनाई करने वाला नहीं आएगा तो उस दिन काम नहीं होगा. मैं एक दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन वो एक दिन काम पे नहीं जाएगा ना, तो 5,000 रुपए का सीधा नुकसान है. Now that opportunity cost or cost of hiring or cost of attrition, that when you start calculating, you realize that your role is so important for the organization. एक दिन अगर आदमी नहीं आता है तो 5,000 रुपए का सीधा नुकसान, मतलब 1.5 लाख रुपए महीना और 20 लाख रुपए साल का, है ना. Yes, sir. Now, if I replace that one person in time, I'm generating 20 lakh revenue for the organization, which is my direct contribution. But ये कब होगा? जब होगा जब हम ये डेटा एनालाइज करें. Yes, sir. For us 10% absenteeism तो चलता है ना. अभी कोई नहीं आया तो मैं क्या करूं? कोई नहीं आया आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप वर्कफोर्स को ऐसा तैयार कर सकते हो कि अगर कोई नहीं आया तो दूसरा उसके लिए काम कर ले, है ना. मम्मी बीमार हो तो आपको खाना बनाना पड़ता है ना. It is multi-skilling. It is not your job. It is not your role. Your role is to study. But if you understand कि भाई ये frequent है, ऐसा बार बार है, तो then पापा has to tell you, बेटा सीख ले, कम से कम रोटी बेलना सेकना तो सीख ले, सब्जी बाहर से मंगा लेंगे, और vice versa. So you develop that skill. Now that papa is nothing but an HR who will ensure that all the people in the family know the basics
वॉशिंग मशीन चलाना आना चाहिए, रोटी बेलना आना चाहिए, बर्तन थोड़े बहुत धो ले काम का, राइट? दैट इज एन HR जॉब what your father will do in case of your mom is not available for XYZ reasons, because show must go on. तो एक का दो दिन जली हुई रोटी से चला लेंगे, देन बोलेंगे भाई नुकसान हो रहा है, दिस विल नॉट हेल्प. देन यू आल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि यार कहाँ गड़बड़ हो रही है, मैं ज्यादा सेक देती हूँ, मेरा ध्यान मोबाइल में चला जाता है, रील देखते देखते रोटी जल जाती है, चावल में पानी कम डाला तो कम कच्चे रह गए, ज्यादा डाल दिया तो पिघल गए. All these are data, nothing but nothing else. Same thing is applicable in your human resource data management as well. So when we say cost of attrition, it is poor hiring, suboptimal compensation, जरूरत से कम स्किल वाले लोगों को ले लिया, तो आई एम पुटिंग मोर एफर्ट ट्रेनिंग देम. बहुत ज्यादा हाई स्किल लोगों को ले लिया तो आई हैव मोर एफर्ट रिटेनिंग देम, है ना? आपके घर में हाउसमेड है, उम्र वाले हैं बेचारे, मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको दोबारा काम करना पड़ेगा. वो बर्तन धो के गए, लेकिन फिर भी कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो आपको खुद दोबारा धोने पड़ेंगे. दैट इज रीवर्क. बहुत स्मार्ट है, यंग, पापा भैया ऑफिस जाने छोड़ देंगे, घर पे रहेंगे, और वाइस वर्सा. ओके, सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन चैलेंज. सो व्हाट वी नीड इज अ राइट फिक्स. और राइट फिक्स कहां से आएगा? जब ये डेटा अपने पास होगा तब, कि मुझे किस स्किल सेट का आदमी रुकता है, किस स्किल सेट का आदमी जल्दी छोड़ के चला जाता है. अल्टीमेटली इट इज जस्ट कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. नाउ व्हाट ऑल थिंग्स डेटा एनालिटिक्स कैन डू? It can measure and manage. First quadrant is measure and manage. If you can measure, you can manage. If you can manage, you can execute. तो अगर इन चीजों पे ध्यान रखेंगे कि भाई रोज चावल कच्चे रह जाते हैं, तो एक दिन गलती है. बट अगर ये रिपीटेड हो रहा है, ओके, तो देन आई हैव टू मेजर कि कहाँ गड़बड़ हो रही है. मैं चावल कितना ले रहा हूँ, पानी कितना डाला, कुकर का ढक्कन सीटी बराबर है कि नहीं, कितनी देर पकाया, जल्दी बंद कर दिया कि लेट बंद किया. You may not keep a track of this data in a chart paper, but you will start observing this. When you start observing, you will understand कि कल ठीक ठाक था, मतलब कल कम कच्चा था, आज ज्यादा कच्चा है. कल मैंने क्या किया था? कल मैंने 1 कटोरी चावल लिया था, 3 कटोरी पानी लिया था. Trial and error method, sir. Correct, trial and error method. But trial and error, to an extent, it will work. Consciously, okay. Yes, sir. हाँ, but then you have to think कि भाई कल, जैसे बताओ, कल मैंने 1 कटोरी चावल में 3 कटोरी पानी डाला था, आज चावल 1 कटोरी था लेकिन पानी 2.5 कटोरी डाला, तो ज्यादा कच्चा रह गया, मतलब मुझे 3.5 कटोरी पानी डालना चाहिए. So when you measure, you can manage. When you manage, you will execute the things. So on 4th or 5th day, if you start observing all these things, you will ensure that your rice is parboiled, ठीक ठाक पका है. Okay. Then it will also have a linkage of business objective and people strategies. As I said, 20 लाख रुपए का रेवेन्यू लॉस अगर एक आदमी नहीं आता है तो, when you start monitoring this, you will understand what is the impact on the business of non-hiring या vacant position. Compliance में अगर आदमी नहीं है HR में, तो रोज शायद काम में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन कॉम्प्लायंस ऑडिट होगा, लेबर कमिश्नर, लेबर ऑफिसर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आके विजिट करेगा और जो पेनल्टी या फाइन इंपोज करेगा ना, that value will be far more higher than hiring a compliance manager. As severe as you may get a shutdown notice. Okay. So that you will have to measure that where is my compliance going.
मुझे 100 आदमी चाहिए, 90 लोग हैं, 10 लोग कम हैं, तो भी मेरा रेवेन्यू 1 करोड़ है। 110 लोग हो गए तो भी मेरा रेवेन्यू 1 करोड़ ही है। मतलब 20 people, 10 people plus minus is a deflection. So month on month, if you see the revenue versus manpower, you will realize that मैं 90 लोगों से भी अपना काम करा सकता हूँ। जो काम मैं 110 लोगों से करा रहा हूँ, वही काम मैं 90 लोगों से भी करा सकता हूँ। So I can always optimize. I am not saying कि हमको 10 लोगों को निकाल देना चाहिए या 20 लोगों को निकाल देना चाहिए, but those 20 people can be deployed on other operations where the revenue can be generated. Okay. So to clearly demonstrate the interaction of business objective and workplace strategies to determine a full picture of likely outcomes. मुझे कितना रेवेन्यू चाहिए, कितने लोग हैं, ये कंपोजिशन अगर मैं मॉनिटर कर रहा हूँ मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, डे ऑन डे, आई अंडरस्टैंड कि मुझे इससे कम लोग होंगे तो किसी कीमत में पॉसिबल ही नहीं है। इतना टॉलरेंस है, मतलब 5 आदमी प्लस माइनस इज ओके। 100 का जरूरत है, 95 आएगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, 105 आएगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि 5 नए होंगे, वो सिखाने होगा तो 1% वेस्टेज निकलेगा। इफ देयर अनस्किल्ड दे विल वेस्ट। आपको रोटी बनाना नहीं आता है तो शुरुआत के 4 दिन में जलाओगे, जलेगा तो कोई खाएगा नहीं, कच्चा रह जाएगा तो भी नहीं खाएगा। सो दैट्स अ वेस्टेज। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा मैंने लगाया, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट? So the business demand on HR are increasingly going to be on analysis just because people are so expensive. Employee cost, manpower cost, all these are cost, all these are expenses for the organization. तो ऐसा होगा कि यार इस आदमी को मैंने 15 लाख रुपए का पगार में रखा है, बट आउटपुट तो नहीं है, तो क्यों रखा है? या एचआर में 10 लोग हैं, टोटल सैलरी कंपोनेंट एक्स, प्रोडक्शन में 5 लोग हैं, टोटल सैलरी कंपोनेंट एक्स माइनस 10। प्रोडक्शन में रेवेन्यू प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आदमी ज्यादा होने चाहिए, एचआर इज एन एक्सपेंस सेंटर, 2 आदमी कम होंगे तो भी हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। सो दैट कॉम्पोजिशन यू विल हैव टू वर्क आउट, and that is only possible if you have the sufficient data and our analytical mind and performance improvement. 110 लोगों से मैं जितना काम ले रहा था उतना मैं 95 से ले सकता हूं, तो मेरे पास 15 लोग एक्स्ट्रा हैं। या 110 लोग आज 100% काम कर रहे हैं, तो कल यही 110 लोग 105% काम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? मुझे उनको कहाँ ट्रेन करना पड़ेगा, किसको मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, किसको मैं रीशफल कर सकता हूं? Your potential, succession planning, everything comes from this data analysis. Job positioning, job evaluation, everything comes from this data analysis. So important in this entire bhashan is data and how to capture that. Okay. So when I say the examination marks, for example, तो सुनने में बहुत अच्छा लगा, आसान भी लगा अपने को, but then in what proposition I need to arrange this data? मेरे पास सारे स्टैंडर्ड्स के मार्कशीट्स हैं क्या? So do I have historical information? अगर पुराना ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे पास पुराने इंफॉर्मेशन हैं क्या? अगर है तो उसको मुझे किस ऑर्डर में रखना चाहिए? एन एनुअल फिगर विल हेल्प मी। ओके, मोटा मोटा यस शायद करेगा,
ओके, बट लोगों का रिक्रूटमेंट में करता हूं तो ऑन एन एवरेज मुझे 80-90 डेज लगता है मोटा मोटा. इफ आई सी पुट टुगेदर एवरीथिंग, ऑल द डेट्स एंड नंबर्स, मोटा मोटा 80-90 डेज लगता है. बट इफ योर मैट्रिक्स आर ऑर्गेनाइज प्रॉपरली तो हो सकता है आपको इसे पता चले कि फेब्रुवरी एंड मार्च या मार्च अप्रैल ये मंथ ऐसे हैं जहां आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है हायरिंग करने में. आप अगर पोजीशन फ्लोट करेंगे तो आपको जो एवरेज 90 डेज है ना, उसमें से मार्च अप्रैल में जो भी पोजीशन आपने फ्लोट किए थे उनकी हायरिंग में आपको 120 डेज लगा. लेकिन अक्टूबर नवंबर में आपने जो भी पोजीशन फ्लोट किया था वो 50-60 डेज में कंप्लीट हो गया. My average is 90 days. But वेरिएशन क्यों आता है? हाँ, ये एनालिटिक्स, ये वेरिएशन क्यों आया? Okay. Now, what could be the reason? Any wild guess? Any thought on this? तो एक ये हो सकता है कि जो बहुत यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है वहाँ पे सेशन उसी टाइम एंड होता है और प्लेसमेंट वाले प्रोसेस तो उस टाइम स्टार्ट होता है. लाइक पीपल मोर अप्लाई ऑन दैट ड्यूरेशन. तो अप्रैल मैं में जल्दी ऐसी होना ट्राई चाहिए, कर मार्च रही अप्रैल हूँ, में. बस डेटा नहीं. हाँ, तो मार्च अप्रैल में जल्दी होना चाहिए. हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ. ये सब, बट आपके पास ज्यादा एप्लीकेंट्स आएंगे तो आपको उसमें एनालाइज करने में भी तो टाइम ज्यादा लगेगा. लाइक अगर हमारे पास 10 आते हैं तो उसमें शॉर्ट लिस्ट हम कर लेंगे. अगर 100 आएंगे तो विल हैव टाइम स्क्रीन ऑल द एप्लीकेशंस. घर में 25 किलो आटा भर और के उसके रखा है. प्रोसेसेस भी. घर में 25 किलो आटा भर के रखा है, 2 रोटी जलेगा तो प्रॉब्लम है? इज इट सिग्निफिकेंट? नो सर. नो. 2 किलो आटा है, 2 नो रोटी जल सर. गया तो सिग्निफिकेंट है? नो सर. 100 ग्राम आटा है, 2 रोटी जल बट गया सर तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है? कॉस्ट भी तो देखना पड़ेगा. क्या देखना पड़ेगा? तो कॉस्ट भी तो देखना पड़ेगा. भले वो मेरे पास 25 केजीज थे, बट अभी अगर हम उसी रेट से हर दिन उतना जलाते रहे तो एक टाइम आएगा जब हमारे पास नहीं बचेगा और हम वो भी नहीं कर पाएंगे. तो अगर हमारे पास 100 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं और हम उनकी स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हम उनकी क्वालिटीज अच्छे से नहीं देख पा रहे और हम क्विकली हायर करते जा रहे हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस भी तो करा सकते हैं. देखो, मार्च अप्रैल में जब इन प्लेसमेंट और दैट व्यू वी हैव टू गिव मोर टाइम. तो that, Yes, see, sir. if it is quality, so that is across the year. 12 के 12 महीने आपको वही क्वालिटी चाहिए ना. अप्रैल वाले अच्छे महंगे चाहिए, मजबूत चाहिए, और सितंबर अप्रैल कमजोर, कम पढ़े लिखे चलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना. No, sir. your resource No, quality sir. is same ना across the year. रोटी का क्वालिटी तो पूरे साल ऐसे ही ना, फुल का तो फुलना ही चाहिए ना. Yes. लेकिन जब मेरे पास बहुत ज्यादा आटा है तो Yes. मेरे आई हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी. आई हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि एक आध बिगड़ गया, टेढ़ा बन गया तो चलेगा. So one dimension of this can be like, as you have not worked in the industry, all your answers are correct. Okay. But when you see from the industrial perspective, March, April, May, it is generally a season of increment and appraisal across the organizations. Yes, sir. जब तक आपका स्कूल का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, अगले साल का पढ़ाई चालू नहीं करोगे. कहीं फेल होगी Yes. तो, है ना? Yes. या 90% मार्क्स आ जाएगा तो इस बार नीट क्लियर कर देंगे. Same thing is in the industry also. So people will wait for their appraisal. छोटा इंक्रीमेंट 10% मिलने वाला है ना, तो रुक जाते हैं. Let us see what happens. Okay. So therefore they will delay. आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जल्दी, या वही लोग रिस्पॉन्ड करेंगे जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है.
for in dire need of job, perhaps then you see वो quality वाला concept. कि CV तो 100 आ गए लेकिन काम का एक भी नहीं है. Because skilled people are not applying. Yes. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या होगा? ये साल का इंक्रीमेंट ले लिया, ये साल प्रमोशन हो गया, अब अगले साल तो होगा नहीं. चलो ऑफर अच्छा है, कंपनी अच्छा देख रहा है, लेट अस ट्राई. So you get comparatively faster results. People with good skill may start applying in that duration. So your average time, your lead time of hiring may reduce in those months, may increase in this month. Okay. प्रोडक्शन में इसका उल्टा हो सकता है. मैं एनुअल एब्सेंटिज्म एवरेज, आप एचआर में मैनेजर है, आपका सीईओ आपको बोलता है भाई व्हाट इज द एब्सेंटिज्म एवरेज. आप बोले साहब साल का करीब 8 to 10% एब्सेंटिज्म है, मतलब 100 लोगों में से 10 लोग ऑन एन एवरेज नहीं आते. सो इट इज एक्सेप्टेबल. फॉर एग्जांपल फॉर दैट इंडस्ट्री इट इज एक्सेप्टेबल. आपका बिजनेस प्लान और बाकी चीजों को मीट करते हुए 10% एब्सेंटिज्म इज एक्सेप्टेबल. यू आर मैनेजिंग इट विद अदर ऑप्शंस और अदर अल्टरनेटिव. कुछ ओवर टाइम करा लिया, कुछ प्रोडक्शन प्लान कम है, कुछ आउटसोर्स कर दिया, आपने वो 10% मैनेज कर लिया. सो एनुअली 10% इज ओके. लेकिन इन द मंथ ऑफ मार्च योर एब्सेंटिज्म इज सब्सटेंशियल. क्यों? होली का टाइम है, पीपल गो बैक टू देयर नेटिव्स. नवंबर एब्सेंटिज्म इज वेरी हाई. दिवाली का टाइम है, पीपल गो बैक टू देयर होम, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है ना, irrespective of their job type. This is generally happens, which means your absenteeism in the month of March and November will be significantly high, 20-25%. So how will you compensate the loss in those months with other 10 months? That is analytics. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए साल भर का डेटा काम नहीं लगेगा, उसके लिए मंथ ऑन मंथ देखना पड़ेगा. So if in March my absenteeism has gone 20%, I will ensure that April, May में मेरा absenteeism 2-3% है. I have more people on the shop floor, so that my annual average is 10%. Okay. Yes. If you see this example, that it is how to interpret the data. That is what HR analytics is. 10% absenteeism is information. It's the data. Now, out of this 10% absenteeism, what are the reasons because of which people remain absent? So for that, you need a matrix. For that, you need a table. For that, you need a categorically captured information. क्या क्या हो सकता है? Department, number of days of leave, age of the person taking the leave, reason of leave, whether it is medical, whether it is social, whether it is any other personal, whether it is festival, whether it is work pressure, whether it is too much of target, okay, whether it is a critical operation, and then based on that, you will have some informations. Employee turnover is 18%. Turnover मतलब लोगों का आना जाना is 18%. But if you compare the same 18% with previous year, if you see the trend for 2 years, that is matrix, then you understand that there is a 4% increase in employee attrition. मतलब इस साल 4% लोग ज्यादा छोड़ के गए compared to previous year. Now this will compel you to think and analyze why it has increased 4%. 4% क्यों बढ़ गया?
4% लोग एक्स्ट्रा छोड़ के क्यों गए, तो यू विल गेट द रीजन। कोई बोलेगा फर्दर स्टडी, कोई बोलेगा फैमिली इश्यू, कोई बोलेगा लोकेशन कंस्ट्रेंट, कोई एक आध ऐसा बोलेगा कि साहब वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं। ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम when you accumulate all these facts and figures, you come to know that मेरा जो टोटल एट्रिशन है ना 18% जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, उसमें से 50% रीजन इज पीपल गोइंग फॉर हायर स्टडी। ओके, इससे कहां फर्क पड़ेगा? इफ यू गेट दिस मैट्रिक्स दैट 50% ऑफ टोटल एट्रिशन, मतलब आपके जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो फर्दर स्टडी के लिए जॉब छोड़ के जा रहे हैं। दिस विल इम्पैक्ट वेयर? सर ऑर्गेनाइजेशन को तो करेगा ही। एक ये भी डेटा हमें देखे जाएगा कि जब भी हम किसी को हायर कर लें उनका फ्यूचर गोल पता कर लेते हैं, दैट आप कितने साल तक के लिए काम कर सकते हो। अगर आपको हायर स्टडी के, जैसे कि आपने बोला, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो हाउ क्विकली यू आर गोइंग टू टेक इट और इम्प्लीमेंट इट। तो ये सारे डेटा एक तरीके से मिल रहे हैं हमें। और ऑर्गेनाइजेशनल लॉस तो है यहाँ पे, क्योंकि जो भी हमने कॉस्ट बेयर किया था उनको हायर करने में, वो सारी चीजें हमें वापस से करनी पड़ेंगी वो प्लेस को फिल करने के लिए। तो एक मिनट, साक्षी, यस साक्षी है कि सो गई? अभी टेक्निक बताया, अभी इम्प्लीमेंट कर दिया इसने। ऑडियो वीडियो सब ऑफ करके गायब, नाम दिख रहा है। सर, यहाँ पे उन्होंने यूज कर लिया जो आप बोल रहे हाँ, मैं बोला थे। ना, अभी मैंने आइडिया दिया, अभी इम्प्लीमेंट किया। थकी हुई भी लग रही थी अभी जब आई तो। ओके, सो मेरे टोटल एट्रिशन का 50% एट्रिशन है बिकॉज ऑफ हायर स्टडी। एज एन एचआर आपको आपके कौन से प्रोसेस में फोकस करना पड़ेगा? तो पहले तो हमारी जो भी पॉलिसी है उनको क्लियर करनी पड़ेगी। लाइक हमें स्ट्रिक्टली जब भी हायरिंग के टाइम में हम उनके पास ऑफर लेके जाएंगे तो हमें क्लियर करना पड़ेगा दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो नहीं छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद हम ये भी पता कर लेंगे कि उनकी कोई इंटरेस्ट भी है हायर स्टडी के, और किन सर्कमस्टांसेस पे वो ज्यादा क्विकली उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें उनको लाने के बाद ये सब नक्की करेंगे ना? सर लाने के बाद या फिर जिस टाइम हम उनको हायर कर रहे हैं उस टाइम। तो जब हम उसको हायर कर रहे हैं वो बोलेगा कि मैं आपके साथ रहूंगा, और फिर थोड़े टाइम में चला जाएगा और हायर स्टडीज। सर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। ऐसा कोई प्रोविजन होता है ना कॉर्पोरेट में, लाइक कोई फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो दे आर बाउंडेड टू सर्व फॉर अ सर्टेन इयर्स एंड बिफोर दैट दे कुड नॉट लीव द कंपनी। नहीं, ऐसा देयर इज नथिंग लीगल इन दिस। ये तो बंधुआ मजदूरी हो गई ना, है ना? तुम 3 साल तक छोड़ के नहीं जा सकते, yes. ठीक है? फिर भी अगर उसे जाना है तो जाएगा ना। I don't know सर, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जब भी मैं ट्राई करती हूँ यू मेक मी फील लाइक स्टूपिड, क्योंकि मैं ऐसे ही No, no, आंसर no, दे no. देती हूँ। There is nothing like feeling stupid. It is always good to think. That is what analysis is all about. You know, to what extension or to what dimension you can take it. Software and applications are just a tool developed to reinforce your own thoughts and ideas. अगर मैं हूंगा तो मैं अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को रिव्यू करूंगा। मैं हायर करने से पहले सोचूंगा कि अगर मैं एक डिप्लोमा को हायर करता हूं
तो वो 6 महीने में 1 साल में छोड़ के चला जाता है. So if my product and process are flexible enough, and if I can, spend couple of thousand more, I will hire a degree instead of hiring a diploma. उसका हायर स्टडी में जाने का प्रोबेबिलिटी कम है ना. या मैं डिप्लोमा से कम का कोई बंदा सोर्स करूंगा. Suppose I'll source for a 12th pass or an ITI. I'll train them on my process. So the longevity or the reason of separation on education ground will reduce. Right? If my 50% iteration is because of company policies. Okay, so irrespective of the business school I am hiring, if 50% लोग कंपनी छोड़ के जा ही रहे हैं, and I see the undercurrent that it is because of the organization's own processes, then my strategy will be to improve on the processes, not on the hiring process. जो policies के बारे में अभी तुमने बोला, so then I'll focus inward, otherwise I'll focus outward. So in one scenario, if it is higher study, I'll focus on the recruiting strategy. If it is not a higher study, but if it is a organizational reason, then my strategy will be on the retention, not on the hiring. Getting? And this is possible only if you're analyzing your data. खाली आ रहा है जा रहा है तो आप रिक्रूट करते रहोगे, वो जाता रहेगा, रिक्रूट करते रहोगे, जाता रहेगा. You'll keep spending your time on hiring people. They'll come, they'll stay, they'll go. But if you try to analyze the reason, you'll be able to define your strategy. So what it is, the basic purpose or the objective of HR analytics is to provide the insight to the organization that where you should focus. है ना. आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलो साहब बीमार हूं, I'm not well. It's a problem. I'm not well. It's a problem. डॉक्टर कुछ भी गोली लिख देगा, 2 इंजेक्शन ठोक देगा. Will it help? Will it help to improve your condition? Maybe. Not at all, May sir. not be. No, it's not at all. Maybe, may not be. So without knowing the problem, how can somebody solve it? Doctor is very experienced. He knows कि इस महीने में, इस सीजन में, इस एरिया में ऐसा ही प्रॉब्लम होता है. So when you go and tell I am not well, he understands or he assumes. तो गोली दिया इत्तेफाक से ठीक नहीं. एक्सीडेंटली कोई और बीमारी निकली फिर. वो बात की बात है. 2 गोली दिया, आप ठीक हो गए. Then it is a coincidence and not an analysis. But when you go, you tell that I am not feeling well. आज ठीक नहीं लग रहा है. तो पूछेगा क्या ठीक नहीं लग रहा है? सब दर्द है. तो then the question will be कहाँ दर्द है, क्या दर्द है, कैसा दर्द है. मीठा दर्द है. फिर वही वाली दवाई मिलेगी, सोने के बाद खाओ और जागने से पहले. हाँ, एक गोली सोने के बाद और दूसरा सुबह उठो तो. नहीं, उठने से पहले. उठने से पहले मैं होता तो मैं तो एक बोलूंगा. दोनों ही कंडीशन में सो ही रहा होगा, खाएगा कैसे? मैं तो ऐसा बोलूंगा, एक गोली रात में सोने से पहले, दूसरा सुबह उठो तो. नो सर, सोने के बाद और उठने से पहले. सोने के बाद उठने से पहले. So unless the doctor will not probe the actual treatment, will not help. इत्तेफाक से हो सकता है ना, उसके एक्सपीरियंस से हो सकता है. But unless you have the data, you will not meet the goal. So that is the very purpose of analytics, any analytics.
In HR, it is more focused now because lot of options available. है ना? अभी बहुत opportunities है. So in Banaras, if there is hundreds of colleges, so the professor have all the possibilities of changing from one college to another college. And the major reason can be number of lectures and payment per lecture. Yes. Now, if you want to retain good people, you want to retain good professor, your strategy will be that I'll retain good people, I'll compensate them accordingly. So lectures are moderate, payment is adequate, and engagement is 100%. Okay, but this all strategy will be possible only if you are analyzing this data. Now, this is one case study on attrition. It is an attrition case study. So Credit Suisse करके company है. It's a, I think, NBFC, non-banking finance company. Where they predicted कौन-कौन छोड़ के जा सकता है ना? Now this is even before the attrition happening. So as an HR, if you have that insight, ये कहाँ से आएगा? ये डेटा स्टडी करने से आएगा. So when I hire, I largely know ये कितने टाइम तक टिकेगा. What could be the longevity of this person? उसके हाव भाव से, काम करने के तरीके से हमको समझ में आता है. क्लास में कौन बच्चा होशियार है, कौन एकदम बुद्धू है ना? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास हमेशा बंक करेंगे फिर भी स्कोर अच्छा आता है. कुछ ऐसे जो रोज आएंगे बेचारे फिर भी जैसे तैसे पास होंगे. So the professor and teacher know. They know by virtue of their own experience. So Credit Suisse, in March 2015, Wall Street Journal published an article that the boss who might quit. And Credit Suisse applied this algorithm to diagnose that who all can quit, who all can leave. Now, leaving someone will always have an impact on the business. And as I said, that if they are the people who are generating revenue, Salesforce, for example, आपका supply chain या sales marketing का head, if he quits, the impact on the business will be very severe. Yes or no? Yes, sir. Definitely. घर में मम्मी बीमार पड़ जाए तो खाने की क्वालिटी में इम्पैक्ट कैसा होगा? Drastic. है ना? खुद का बनाया खुद नहीं खा सकते आप. Yes or no? Yes, sir. Very true. But if you know that सुबह देखा मैं थोड़ा धीमे धीमे काम कर रही थी, हो सकता है शाम तक उसकी तबीयत गड़बड़ होगी, या मौसम ऐसा है, या you understand, you observe that हर साल बारिश के सीजन में मम्मी को थोड़ा सा तकलीफ होता है, ठंड बहुत पड़ती है तो उनसे काम नहीं होता है. Now if you have all these informations, you can always predict that ये 3-4 महीने में ऐसा होगा कि मम्मी महीने में 2-4 दिन तो सर्दी खांसी बुखार रहेगा, काम पे लगाएगी, है ना? So if you know this that this is going to happen और अपना बनाया हुआ मैं खुद नहीं खा सकती उन दिनों में,
जब मम्मी नहीं बना रही है, तो दो चीज करना पड़ेगा, या तो आउटसोर्स करना पड़ेगा ताकि अच्छा खा सको, तो जोमेटो और स्विगी के भरोसे जाना पड़ेगा। Now that is a cost. That is a cost. But if you know that no, this is the season where my mom will have some ailment, she will not be unwell, she will be unwell. So if I start cooking certain things, in a edible way, खा सकती हो ऐसा, let that be Maggi, let that be khichdi, let that be dal chawal, let that be roti sabji. So you will save that extra Swiggy Zomato cost. Yes. The matar paneer that you cook at home, खाने लायक, the same matar paneer from Swiggy and Zomato will cost you 300 rupees. Yes. Same thing is in the organization. So if you know, if you can predict, if you can find out by some means that, my sales and marketing head may quit for XYZ reasons, then the impact will be significant because he knows the entire dealer network. He knows the entire supply chain. He knows the entire consumer behavior. And if he quits in between, my entire supply chain, my consumer network, my way of selling product will affect significantly. So I'll put up the effort in two areas. One, retaining him. Second, developing a succession. So in your case, as we say the cooking wala example, there is a succession, developing a succession. That if she is not available for cooking, some of the information, some of the recipes, बना के अपना चल जाएगा. It will not have a significant impact. The business will generate adequate revenues. Or you will make sure that मम्मी बीमारी नहीं पड़े. रोज सुबह शाम लौकी का जूस, शाम को करेले का जूस, दोपहर में जामुन का जूस, 12 महीना 365 दिन, पसंद आए नहीं आए बट चालू है. That is retention. क्यों बीमारी नहीं पड़ेगी. Okay. Yeah, succession. अगर if she is not available, this is how I can compensate. So that is what HR data analytics is all about. Now, this is another case study by HBR, Harvard Business Review, which talks about the employee engagement. है ना? रेसिपी तो अच्छी आती है बनानी, लेकिन मूड नहीं है. यार रोज का झंझट यार ऐसा. You can cook best of the matar paneer when you are in best of your mood. कल एग्जाम है, टेस्ट भी देना है, रात में लाइट भी नहीं है, वार्डन भी किचकिच करती है. ऐसे में मटर पनीर बनेगा तो सही, खाने लायक भी बनेगा, लेकिन एक्सोटिक नहीं बनेगा. Okay. So then your mom or dad will have to keep you motivated. Yeah, Anjali और साक्षी वो लास्ट टाइम बनाया था, बहुत बढ़िया बना था. It was very delicious. उसके सब बनेगा तो बिल्कुल बचेगा नहीं, हमको खुद भी फेंकना नहीं पड़ेगा. Now that engagement, that motivation, will enforce you to do better. So if it is predicted, if it is analyzed, मैं अंजलि को थोड़ा सा ऐसा बोलूंगा ना, तो she will do wonder. वो मटर पनीर के साथ में 2 कटलेट भी बनाएगी. That is how you will affect on the business. So if I'll ensure that my people working on the shop floor improves
their connection with the organization by very minute percentage, still my production will increase by significant number. Okay, for example, I have 1,000 people working in the shop floor. Everybody is making one product every day. So I am making 1,000 product every day. Now, by some adjustment, some means, if I push them to make 1.25 items every day, same 1,000 people will make 1250 items at the end of the day. Because everybody is working 25%, everybody is delivering 25% extra. Now, to get the 25% extra, I might have spent 1%. शायद ट्रेन किया हो, शायद एक्स्ट्रा छुट्टी दिया हो, शायद 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कराया हो, शायद 8 घंटे में से उसका काम 7 घंटा करके उसको 1 घंटा आराम दिया हो, शायद उसका खाना अच्छा कर दिया हो, उसको इंसेंटिव बढ़ा दिया हो. Anything is possible. Okay, so motivation can be by any means. There is a theory called Maslow's need hierarchy theory. को लिख के रख लो, पढ़ना तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं. You can also suggest. You can also come up that what theory. पढ़ चुके हैं सर ऑलरेडी. पढ़ चुके हैं ना? यस सर, हमारे कोर्स में भी एक बार पढ़ाया गया है एंड मेरे कॉलेज के सब्जेक्ट में भी है ये. तो होशियार बच्चे. So then you know what keeps you motivated. But this is possible only if you analyze the data. Jet Airways, SpiceJet, किसी का एक ऐसा केस स्टडी भी था, British Airways or some airways, it was there that they need to manage the cost or expense. उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको मैनेज करना है, उसको थोड़ा सा कम करना है. आई वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट. एक तरीका तो ऐसे कि 10 आदमी निकाल दो, कॉस्ट बैलेंस हो गया. 2 फ्लाइट कम कर दो, कॉस्ट बैलेंस हो गया. उसमें फ्यूल आधा भरो, कॉस्ट बैलेंस हो गया. एक ही इंजन चलाओ, कॉस्ट बैलेंस हो गया. एक्चुअली कम करेगा. सॉरी सर, प्रोडक्टिविटी भी तो कम हो रही है ना सर. प्रोडक्टिविटी भी तो कम होगी. वो 2 फ्लाइट जो हम कैंसिल कर रहे हैं उसके थ्रू जो भी रेवेन्यू आ रहा था वो तो घट गया ना. तो यहाँ पे कैसे बचा पा रहे हैं फिर हम? परफेक्ट. ये तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं. जितना फ्यूल भरते थे उससे 10% कम फ्यूल भरेंगे. 10% काम भी कम होगा फिर. हाँ, तो उतना पहले गिर जाएगा नीचे. नहीं क्या, एक ही इंजन भी चलाएंगे हम, 2 इंजन क्यों चाहिए? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. और एक्सीडेंट रिस्क बढ़ा रहे हैं. Exactly. So what is to be done? That is an analysis. So what they did, वो ड्राई फ्रूट्स सर्व करते थे फ्लाइट में. तो उस ड्राई फ्रूट में से उन्होंने 1 बादाम, 1 आलमंड पर हेड पर पर्सन दे रिड्यूस्ड. सो अगर 10 देते थे तो 9 देना शुरू कर दिया. एज ए कंज्यूमर 10 का 9 मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि 10 देते थे कि 9 देते थे. टू मी इट इज एन आलमंड, है ना. फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, 1 lakh traveling, so 1 lakh piece of almond in terms of kg. Okay, say 50,000 kg, for example, just a random cost per kg is say 1,000 rupees. So 50,000 multiplied by 1,000, it's 50 lakhs or whatever, 5 crore, 50 lakhs, whatever is the value. Significant value without affecting your major operations, without annoying your customer. Is possible only if there is an analysis done. है ना?
कहाँ कॉस्ट कटिंग कर रहा है उसका भी एनालिसिस किया होगा तो ये सब कर सकते हैं। नहीं तो दो में से एक इंजन बंद कर दो, केबिन क्रू आधा कर दो, एक ही पायलट 4 ट्रिप मारेगा, तो 2 ट्रिप सही मारेगा, 2 उल्टा कर देगा हवाई जहाज। Okay, so where it is possible, same thing is here in the this thing. One on the compensation part. So there are different case studies on different areas. So the one we thought it was about predictive, it was about the work culture. Second was about engagement of people. It is not very toxic, but थोड़ा सा additional दे देंगे तो क्या होगा. Third is about by paying money. तो अगर मैं 15% इंक्रीज करता हूं, अगर मुझे 15% आउटपुट चाहिए तो मैं 1% इंक्रीज करूंगा, मुझे 15% आउटपुट मिलेगा. Okay, so all these are the various analysis. This is one book, the what the CEO wants you to know. This can be one reference material you can read as far as analysis is concerned, irrespective of HR or anything else. All other departments were already doing. प्रोडक्शन वाला तो रोज सुबह शाम गिनता है, आज इतना थैला बना, गले में इतना पैसा आया, आज इतनी साड़ी बिकी और इतना पैसा, इतना मुनाफा, सीधा हिसाब. पर एचआर दे वर नेवर डूइंग इट. कितने घंटे में साड़ी बनाने, कितना नुकसान किया ने, कितना कहाँ डाला ने. Okay, but then this is one book that can help you to as a reference. You can study this, you'll get some insight on HR analytics. This is a business model or a case model where if you work on employee retention, if you work on customer retention, your overall organization growth is evident. Okay. So if there is 5% change in employee attitude, आप थोड़ा और ज्यादा पढ़ने लगोगे, जितना अभी पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ने लगो. या तो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी यू इंक्रीज, मेथड ऑफ स्टडी यू चेंज, है ना. योर रिजल्ट विल बी इंप्रूव्ड बाय गुड नंबर्स. यू एडजस्ट योर टाइम टेबल. जो आसान सब्जेक्ट है आप जल्दी पढ़ लेते हो तो उसके ऊपर टाइम नहीं देने का, मुश्किल सब्जेक्ट है उस पर टाइम ज्यादा दोगे. तो जो आसान है वहां तो आप ऑलरेडी स्कोर कर रहे हो, जो मुश्किल है उसमें आप स्कोर करने लगोगे तो आपका जो परसेंटेज 57 था ऑटोमेटिकली 60 तक जा सकता है. दैट इज हाउ द एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेट्रिक्स दैट एचआर मेंटेन्स or you as an HR manager should maintain? Some of the things we already discussed, mota mota. So recruitment, which is on hiring. Okay, so hiring में the element which are important is cost of hire. एक पोजीशन को फुलफिल करने में मुझे कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है. Sometimes this is absolute number, sometimes it is derived number. आपने कितने फोन कॉल किए, कितने मिनट्स के लिए किए, तो यू ऑलरेडी हैव द बिल. दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, टेंजिबल. लेकिन आपने कितना घंटा लगाया वो फोन कॉल करने में, व्हाट इज योर पेड मंथली या डेली या आवरली, दैट इज इंटेंजिबल कॉस्ट, है ना. सो कॉस्ट ऑफ हायर. देन टैट टाइम बोलते हैं, TAT, टैट, टर्न अराउंड टाइम. टैट टाइम, एक पोजीशन को क्लोज करने में कितना समय लगा, है ना. रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है, इट इज टर्न अराउंड टाइम.
4 लोग खाने वाले हैं, पहले दिन बनाओगे तो हो सकता है 4 रोटी बनाने में आपको आधा घंटा लगेगा, 10 दिन के बाद में वो आधे घंटे का 20 मिनट हो जाएगा, 1 महीने बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे 5 मिनट में 4 रोटी हो जाएगा फटाफट। So turnaround time have reduced from 30 minutes to 4 minutes or 5 minutes. This is turnaround time. So that is the matrix of recruitment. Cost of hire, turnaround time. These are two major elements in recruitment. पोजीशन आपने कितने दिन में क्लोज किया और उस पोजीशन को क्लोज करने में कितना पैसा लगा। तीसरा हो सकता है क्वालिटी ऑफ हायर, जिसको मैंने रिक्रूट किया वो कितने दिन में प्रोडक्टिव हो गया, क्वालिटी ऑफ हायर। सेकेंड मैट्रिक्स इज रिटेंशन या एट्रिशन, आइदर वे। कितने लोग छोड़ के गए, कितने दिनों में छोड़ा। सो टेन्योर विद ऑर्गेनाइजेशन, that is one measurement criteria. Age of person leaving, that can be another criteria. Gender of the person leaving, third criteria. Reason of separation, fourth criteria. This is all about retention या attrition. Okay. जो छोड़ के नहीं जा रहे वो क्यों नहीं जा रहे, है ना, वो भी एक एनालिसिस कर सकते हैं ना। अगर छोड़ के जा रहे हैं उसको पता लगाना मुश्किल है, तो जो नहीं जा रहे उसका पता लगा कि वो क्यों नहीं जा रहे, उन्हें ऐसा क्या अच्छा लग गया कि नहीं जा रहे। तो जो उन्हें अच्छा लगा वो दूसरों को क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। यस और नो, यू विद मी, और मैं कुछ ऐसा हवा में बात कर। नो सर, समझ में आ रहा है? आई एम अंडरस्टैंडिंग। यस, ग्रेट, होशियार बच्चे हैं आजकल। Then third matrix is performance and career management. This talks about your annual appraisal, your performance improvement, vis-a-vis results, KPI और सब पढ़ा ना, KRA, KPI, Yes, sir. OKR पढ़ा ना। key performance indexes. Correct. Yes. तो उसको मेजर करने का there is another matrix. Hmm. ट्रेनिंग, कितने एम्प्लॉयज, कितना घंटा, क्या ड्यूरेशन, क्या टॉपिक, कितना मैन आवर्स, क्या उसका इफेक्ट है, वो ट्रेनिंग करने के बाद क्या फर्क पड़ा। आप लोग एक कोर्स करोगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा ना। Yes, sir. उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आप इंटरव्यू में क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, सैलरी कंपैरेटिवली अच्छा मिल सकता है बाकी लोगों के मुकाबले, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा। Yes, sir. So all these are tangible and non-tangible benefits which comes under training matrix. Compensation and benefit, क्या सैलरी है, क्या सैलरी बैंड है, किस एज ग्रुप, किस क्वालिफिकेशन, किस एक्सपीरियंस के लोगों को कितना पैसा मिल रहा है। ऑल दीज आर कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स। कहाँ ओवर टाइम ज्यादा हो रहा है, कहाँ लोग छुट्टी ज्यादा ले रहे हैं, दीज आर कॉम्पेंट बेनिफिट मैट्रिक्स। देन वर्कफोर्स मैनेजमेंट, इसमें डेमोग्राफी आ गया, क्वालिफिकेशन आ गया, फैमिली डिटेल्स आ गए, है ना, कितनी वाइफ है, कितने बच्चे हैं, स्पाउस का क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चों का एज क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है। दिस इज ऑल वर्कफोर्स मैनेजमेंट। ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू स्ट्रेटेजाइज योर एक्टिविटीज। अगर यंग जनरेशन है ना, मैरिड कम है, शादीशुदा लोग कम है, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये लोग अभी नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, अगर आप रिमोट लोकेशन में काम कर रहे हो तो सेपरेशन इज एविडेंट। शादी करेंगे तो इधर उधर बसेंगे। व्हेन यू हायर अ फीमेल कैंडिडेट, इट्स अ मेजर चैलेंज। ओके, सो यू प्रेफर, इवन इफ यू आर ओपन, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर अगर मैडम ने पढ़ाया है तो आपने पढ़ा होगा। So if it is an open culture, if it is a diverse work environment, male, female, everybody is working together, then the preference of hiring becomes that, okay, we hire to married female, where the probability of separation is less, preferably local
or from nearby places. Okay, it all depends on these basic data. So these are the different HR metrics that one need to follow. ये सब हम already बात कर चुके हैं. Turnover modeling, targeted retention, risk management, talent forecasting. All this we are discussing, right? Yes, sir. Level of analytics, descriptive, operational and predictive. तीनों के ऊपर अभी हमने 3 केस स्टडीज जो देखा वो इसी पे बात कर रहे हैं. कौन छोड़ के जाएगा, इट इज प्रेडिक्टिव. कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या एंगेजमेंट लेवल, इट इज ऑपरेशनल. व्हाट इज योर डेमोग्राफिक, मेल फीमेल, जेंडर डिस्क्रिप्शन, एज, ऑल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. तो यहाँ पे टूल में एक वर्ड लिखा हुआ है SAS. व्हाट डज इट मीन? SaaS is a type of software. Okay, these are application softwares. SAS. Not recollecting the full form, it's analytical system. So this is a tool, this is an application, this is a software that will help you to generate these metrics. Yes, all these yes, मैंने भी सुना है. Database, dashboard, right? So SaaS and reports. MIS बोलते हैं इसको, Management Information System, right? So these are the tools that will help you to make this decision making helpful. Right? Some of the case studies or historical informations that can help you to understand. Starbucks. So these are the companies, Starbucks, Limited Brand, Best Buy. They worked on engagement. तो अगर मैं थोड़ा सा कस्टमर डिलाइट देता हूं तो मेरा रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. My hiring strategy will be different. My retention strategy will be different. There are many such such examples are there. Okay, and based on your area, you can have various key KPIs, key performance indicators that can help you to monitor and measure and generate some analytical information. The very basic tool for all this is Excel, that you use for capturing the data and then doing some kind of data modeling, initial level pay, some kind of basic analysis you can do with Excel. And then you can go for any ERP, that is enterprise resource planning softwares, SAP, Oracle, PeopleSoft. A lot of things are available in the market. Okay, dashboarding will give you an immediate impression, the graphical representation of the things. Some of the areas, what all things you can monitor or measure that can help you to take the strategical decisions. This you might have studied in any of your college: mean, median, mode, variable, t-test, z-test, chi-square test, regression, coefficients. T-test and z-test is new for me. It is in research methodology. And chi-square test is all. Yeah, all these are research methodology. More of the statistical tools that are used. Okay, hypothesis, then deriving that hypothesis, ensuring that hypothesis is correct or not. Okay. Then there are Six Sigma tools that also help in analyzing the data. Cause and effect, या fishbone diagram बोलते हैं उसको. Flowchart, Pareto, histogram, check sheets. There are various tools available for making this analysis. Okay.
we will not go in detail of each and every tool as of now. Okay. But you as a practitioner should know what these tools are and then do some research on this. We will try to do it using Excel sheet in next session. One Excel file, and then we'll try to get some information out of that Excel sheet. Okay. So this is how the process effectiveness is measured, how good it was, what is the trend, how it is improving. Okay. So this is some basic about analytics. Next session, we'll try to do this with some data. So ये तो concept है, theory है. We just try to understand the areas or the elements or why it is so important for HR also. In next session, in 1.5 hours, we'll see with some Excel data what all we can infer using that information, right? Yes. साक्षी है कि अभी भी सो ही रही है? तो फोन करके बता दो कि क्लास खत्म हो गया. Yes, sir. I will use. Yeah, she's not there. So, by any chance, if you have any question, we can still spend some time. नहीं सर, सब कुछ clear है. Okay, done. So then we'll call it off. We'll see you next week. Yes. Thank you, sir. Good night. Good night.